Today we are going to discuss the rest of the risk factors of ulcer, and uh, one of those is NSAID-induced ulcer. First one is NSAID-induced ulcer. NSAID means non-steroidal, non-steroidal, steroidal anti-inflammatory, anti-inflammatory drugs. Inshallah, we will later on discuss what are these drugs. As you people already know, like borin, diclofenac, ठीक है, पोटाशियम, पायरोक्सिकैम, मेलोक्सिकैम, एक्सेट्रा ये क्या है? ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये इनके नाम है, ठीक है। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इंड्यूस्ड अल्सर, इंड्यूस्ड अल्सर। First, let me to briefly explain the role of NSAIDs here. Okay, what basically happens is, let's suppose, for example, this is one of the portion of stomach cell membrane. This is one of the portion of stomach cell membrane, right? This one. And you people know that in any cell membrane of the cell, it contains some kind of phospholipids in it. Phospholipids, 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 right? Okay. No, due to any stimulus, these phospholipids are converted into arachidonic acid, I will write here arachidonic acid, double A, arachidonic acid, right? And here is an enzyme. Listen and remember, as you people already have studied an enzyme responsible for PIP2 breakdown, right? Phospholipase C beta. It's like that. Here is an enzyme that is known as phospholipase A2. Okay? This is a similar kind of enzyme responsible for conversion of phospholipids into arachidonic acid, right? And after that, this arachidonic acid in the cell membrane is converted into different metabolites, and one of those metabolites are prostaglandin, PGs, I will write prostaglandin, okay? And the second one are leukotrienes, okay? And the enzyme here, which is responsible for conversion of arachidonic acid into prostaglandin, is cyclooxygenase here, cyclooxygenase, right? And there are three types of cyclooxygenase: cyclooxygenase 1, cyclooxygenase 2, and cyclooxygenase 3. Cyclooxygenase 3 is very little known, इसके बारे में बहुत कम पता है, but cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2 are well known, right? So cyclooxygenase 1, we can also write it as COX-1. COX means cyclooxygenase 1, right? And the second enzyme here is COX-2, right? Listen it again. Phospholipase A2, arachidonic acid. Then this arachidonic acid is converted into prostaglandins, right? And these prostaglandins, and one of those prostaglandins we have already studied in our previous lecture. In case of GIT, we have studied prostaglandin E2 and prostaglandin I2. And you people know that these prostaglandins, like for example, in case of stomach, these two prostaglandins are associated with decreased HCl excretion, right? Decrease HCl. I am just briefing you people. There is a lot behind the prostaglandins and their synthesis and their breakdown, etc. But I am just here pointing towards our point, that is NSAID-induced ulcer, right? Decrease HCl excretion. Other one is increase HCO3 negative ion excretions, and the third point is increased blood flow. And all the 3 points are going to promote the less secretion of HCl, right? Blood flow. ओके, यहाँ तक ये अब देखो, ये हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ ली। फॉस्फोलिपिड्स था, एराकिडोनिक एसिड था, साइक्लोऑक्सीजनेस था एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके राइट। अब ये जो एनसेड्स हैं ये क्या करते हैं बेसिकली, दीज एनसेड्स कम्स एंड आर गोइंग टू इनहिबिट द COX-1 एंड COX-2, राइट। अब क्या होगा,
देखो NSAIDs क्या करते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये कॉक्स को इनहिबिट करते हैं। अगर हम आप में से कोई भी बंदा अगर उसको कोई पेन हो रही है और वो क्या करता है, वो डिक्लोफेनेक सोडियम ले लेता है, तो डिक्लोफेनेक जाएगा आपके स्टमक में, वहाँ पे मौजूद कॉक्स को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी तो एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगी, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कम हो जाएगी और ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एचसीएल डोमिनेट कर जाएगा। एचसीएल की जो सिक्रीशन हो रही है वो क्या हो जाएंगे, डोमिनेट हो जाएंगे। And listen here, listen. In case of stomach, only cyclooxygenase 1 is responsible for prostaglandin synthesis. Cyclooxygenase 2 is not there. Listen and remember. The COX-1 enzyme is constitutively present in our body. What is meant by this constitutively? Constitutively means it is present by birth in our body and it performs certain physiological function in our body, right? And as you people can see here, one of the example is prostaglandin synthesis in the stomach wall to counter or to nullify the effect of acid, right? COX-1 और COX-2, ठीक है। तो ये COX-1 जो है ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है एंड COX-2, मैं इधर लिख देता हूँ, COX-1 फिजियोलॉजी को रन करता है, COX-2 क्या करता है, पैथोफिजियोलॉजी को रन करता है एंड इट इज इंड्यूसिबल, लिसन, एंड इट इज इंड्यूसिबल मींस if there is an inflammation or there is something wrong with the normal physiology, then COX-2 comes and it performs its role, pathophysiology, right? ठीक है। तो ये इस तरह क्या होता है, एनसिड्स ये क्या करते हैं, कॉक्स की इनहिबिशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सेंसेस कम हो जाती है, एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाती है, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कम हो जाती है और ब्लड फ्लो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स, COX-1 इनहिबिटर्स, COX-2 इनहिबिटर्स। तो इट्स मीन्स दैट कि वी कैन यूज COX-2 ड्रग्स इफ समबडी इज हैविंग अल्सर, ठीक है, क्योंकि COX-2 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो वाली ड्रग्स COX-2 को तो इनहिबिट ही नहीं करेंगी, ठीक है, जिस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होती रहेगी और हमारे जो हमें जो पेन रिलीविंग इफेक्ट है वो उस COX की वजह से मिल जाएगा, ठीक है। जो ड्रग्स COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट करती है उनको नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है। और जो COX-2 को सिर्फ इनहिबिट करती है उनको हम COX-2 सिलेक्टिव इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है, और उनको हम कॉक्सिब्स कहते हैं। उनका क्या नाम होता है, कॉक्सिब्स। दिस इज वन मैकेनिज्म, लिसन, दिस इज द वन मैकेनिज्म ऑफ एसिड इंड्यूस्ड अल्सर। नेक्स्ट वन, सेकंड मैकेनिज्म। सर ये कॉक्स 2 वाली बात पर रिपीट करते हैं ओके प्लीज। ओके ओके ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। लिसन, मैं ये कह रहा था कि देखो, अभी मैंने कहा है ना कि COX-1 जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व है, COX-2 जो है दैट इज इन्वॉल्व इन द पैथोफिजियोलॉजी एंड इट इज इंड्यूसिबल, मींस whenever there is an inflammation or there is something wrong with the normal physiology or somebody is coming from outside like antigen, then this COX-2 uh, becomes active or it becomes inducible, मीन्स दैट कि ये इसकी यहाँ पे जो है ना जनरेशन हो जाती है खुद ही। बट मैंने कहा है COX-1 इज कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रेजेंट इन द नॉर्मल फिजियोलॉजी, या ये ऑलरेडी मौजूद होता है जो कि नॉर्मल प्रोसेस को चला रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा, नॉर्मल प्रोसेस को चला रहा होता है और जो COX-2 है ना ये जो है ये पैथोलॉजी में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में भी कहीं कहीं इन्वॉल्व हो सकता है, जिस तरह ब्लड वेसल में कुछ रोल है इसका नॉर्मली, ठीक है, और ये सीएनएस के अंदर भी इसका कुछ रोल होता है। जब आप कहते हो ना कि मैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कोई एनाल्जेसिक खा लूँ, तो बेसिकली COX-2 को इनहिबिट करता है ब्रेन में जाके, जिसकी वजह से आपकी पेन कम होती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये फर्क समझा रहा था कि जो COX-1 इनहिबिटर्स हैं हम उनको उन पेशेंट में यूज़ नहीं करेंगे जिनको ऑलरेडी अल्सर है, ठीक है, या उसको शिकायत है अल्सर की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर COX-2 इनहिबिटर देंगे, ठीक है, उसको पेन रिलीविंग के लिए, क्योंकि COX-2 का तो यहाँ पे रोल ही नहीं है स्टमक के अंदर, स्टमक में तो COX-1 का रोल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट। तो फिर क्या होगा कि हम COX-2 इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे, सही है। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म, राइट। ओके, द सेकंड मैकेनिज्म इज दैट ये जो एनसिड्स होते हैं ना, एनसिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये क्या होती हैं, ये आपके स्टमक के अंदर ना कुछ मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करवाती हैं, ठीक है, और उन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इंटरसेलुलर एडहियन मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर एडहियन मॉलिक्यूल्स, ओके। और ये क्या करते हैं, these इंटरसेलुलर एडहियन मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स, राइट। फिर क्या होता है, ये न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करवाते हैं, जिस तरह प्रोटीएसिस प्रोटीएसिस, राइट, एंड सम अदर एंजाइम्स, राइट, एंड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो आपको पता है फ्री रेडिकल जो होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे आर गोइंग टू डैमेज योर सेल्स। तो फिर क्या होता है, इससे आपको क्या हो जाता है,
inflammation and cell damage, right? So this is the role of NSAIDs in the induction of ulcer.